जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, सिंध खान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Good morning, my dear faculty members, staff members, students, esteemed guests, and most importantly, my dear campus children, who I can see are the most enthusiastic participants for the 79th Independence Day celebration. So on this momentous occasion, the 79th Independence Day, I extend warm greetings to all of you. Today, our national flag rises high in a very clear sky, and it reminds us of the incredible journey that our nation, Bharat, has undertaken since 1947. It is also a reminder of the responsibility that rests on our shoulders as we march towards India at 2047, to realize our dreams of a fully developed Viksit Bharat, standing tall among the world's most advanced nation, and that is our responsibility at IIT Jodhpur also to contribute to it. By that time, we celebrate the centenary of our freedom. India should be energy secure and energy abundant, with renewable energy driving every home, every industry, and every vehicle. India should be sustainably developed, where economic growth goes hand in hand with the environmental care. India should be a global hub for innovation, business, and entrepreneurship, producing startups and unicorns that solve the world's most challenging problems. India should be a nation of world-class skills, riding on the programs such as Skills India, Made in India, and Atmanirbhar Bharat. India should be a place where the quality of life, health, and education matches and surpasses the highest global standards. Today, on this Independence Day, I invite all of you to take an oath that every project that you take will serve the greater good. Every innovation will be green, inclusive, and future-ready. You will carry the brand name of IIT Jodhpur not as a privilege, but as a responsibility to inspire trust and excellence in whatever you do. Let us promise that when India turns 100 years of independence, and the world looks towards us, they will see us as a prosperous, sustainable, innovative, and deeply human nation that we all will build together. In conclusion, I'll leave you with this thought: the future is not something we enter, it is something that we create. Let us all create a future where every citizen feels the pride and dignity of living in a truly developed Bharat. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. साथियों, यह आज़ादी हमें ना तो किसी सरकार की मेहरबानी से मिली और ना ही किसी कागज़ के दस्तखत से। यह आज़ादी मिली है लाठियों की मार से, गोलियों की बौछार से, फांसी के फंदे से और जेल की सलाखों से।
किसी ने हंसते हंसते फांसी चूमी, किसी ने तलवार तानी थी और किसी ने अंग्रेज़ों के सीने में आग लगानी थी। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। धन पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धन पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर का बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर का बारूद बनाया है हमने। राम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। IIT Jodhpur has introduced the Director's Appreciation Certificate. This recognition will be conferred commencing from this Independence Day. A round of applause to honor the dedication, hard work and commitment of these employees. For this inaugural year, a total of 23 employees has been selected for their exemplary contribution in the following categories. Mr. Shiv Dayal Jatav, Senior Audit Officer. तहजीबों का संगम है जिसे दुनिया भारत कहती है। ओ एक तहजीबों का संगम है जिसे दुनिया भारत कहती है। तुलसी के दोहों के संग तुलसी के गालिब की गजल भी रहती है। ये भारत है, मेरा भारत है, मेरा भारत है। ओ माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। हमारी चलती रही हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा।